तो फ्रेंड्स, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का कुछ सीखेंगे। तो यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। तो हैज़ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो हैज़ कब यूज़ करते हैं हम? व्हेन ही, शी और इट आएगा तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। और हैव कब यूज़ करेंगे? तो आई, वी, यू एंड हैव होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वी विल यूज हैज, एंड व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल यूज हैव। ओके, सो वी विल टेक एग्जाम्पल कि हम कैसे उसको मतलब हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं। तो लेट्स टेक ही। तो ही क्या है? ही के साथ क्या लगेगा? हैज़। तो ही हैज़ अ पेन। फिर आई क्या है? आई के साथ क्या लगेगा? तो हैव। तो आई हैव एन अम्ब्रेला। वी क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल वी के साथ क्या लगेगा? वी हैव टू गो। नाउ यू के साथ क्या लगता है? तो हैव। यू हैव अ कार। नाउ दे हैव एग्जाम। दे हैव एन एग्जाम. Now he is a singular, so he has a zip. She has a laptop. It has black seat. Now we have a questions. वी के साथ क्या लगेगा? हैव. तो वी हैव अ क्वेश्चन. नाउ दे इट्स प्लूरल, तो उसके साथ क्या लगेगा हमारा? हैव. तो they have to come with me. Now Riya is a singular, so Riya has a bicycle. Now you have a puppy. We is a plural, so we have to go to park. Now I have played cricket. आई के साथ क्या लगता है? हैव. नेक्स्ट यू हैव एन आइडिया. यू के साथ क्या लगता है? हैव. नाउ शी इट्स अ सिंगुलर, सो शी हैज एन आइडिया. नाउ दे हैव. इट्स अ प्लूरल, so they have a good practice. Now my mother dash a beautiful sari. Mother have a beautiful sari. So my mother is a singular. Okay, so my mother has a beautiful sari.